Madam Durrani. And our session discussant is Mr. Ali Raza. It is believed that the conference promises to bring new perspective and highlight the innovation and research taking across the STEM sector. I'm also very happy to see the fellow students representing different departments of our university. Before we formally begin the session, I have a few housekeeping notes for all of you. Participants are advised to switch off their mobile phones. Each presenter will get only 10 minutes for presentation. Please mute yourself when you are not sharing. Now, I would like to invite Professor Dr. Fatma Rahman Dar for keynote speech. She is the Director, Center of Teaching Excellence and Learning Innovation at Iqra University, Karachi. She also has served as a teacher, educator, and faculty with various organizations, including Ali Institute of Education Lahore, FAST University, Aga Khan Medical University, Karachi, Beacon House National University, Lahore, and Virtual University, Lahore. She also has worked in the capacity of lead education consultant for the development sector. Ms. Dr. Fatma Rahman Dar. Organization member to provide us opportunity to speak in such intellectual environment. The topic of my study is impact of drug addiction on youth and suggestion to control it at school level. First of all, next यहाँ से होगा. Yes. हम इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि ड्रग एडिक्शन के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसे शैतान का काम कहा. इट्स अ वर्क ऑफ शैतान. इब्ने अब्बास नरेट करते हैं कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी अगर एडिक्टेड हो और वो ड्रंक्ड उसको वफ़ात हो जाए इसकी, तो वो उसके बराबर है जो कि बुतों की पूजा करता है. इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया इट्स द की टू ऑल ईवल्स, इट्स द मोस्ट टेरेबल एंड मेजर सेंस, द मदर ऑफ ऑल ईवल्स. टेल ऑफ ड्रग आउटस्प्रेड. इसकी स्टोरी के बारे में हम जानते हैं कि ये दुनिया में किस तरह फैला, स्पेशली इन पाकिस्तान. तो पाकिस्तान में ये अफ़गानिस्तान के थ्रू आया. अफ़गानिस्तान ड्रग का हब है जो कि वर्ल्ड की 75% ड्रग को प्रोड्यूस करता है और लास्ट ईयर उसने 4,500 टन्स ड्रग को प्रोड्यूस किया है. इसके चैनल्स जिसके थ्रू ये ड्रग को पूरी दुनिया में फैलाता है, एक ईरान टू तुर्की, दूसरा पाकिस्तान वाय बलोचिस्तान एंड मकरान कोस्ट, एंड थर्ड यूरोप वाय सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स. इंस्लेवमेंट ऑफ पाकिस्तान इंस्लेवमेंट ऑफ ड्रग इन पाकिस्तान. इसमें आप अगर रेड लाइन पे गौर करें तो 1982 से 2000 तक इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसमें हर एज ग्रुप का इंसान शामिल है. हुक्का, सिगरेट, चर्स ट्रेडिशनली हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं और रिसर्चर्स सिगरेट को गेटवे कहते हैं. यानी कि अगर कोई बच्चा या बच्ची सिगरेट की लत उसे लग जाए तो उसे ये पता नहीं है कि वो क्या टॉक्सिक चीज़ अपने अंदर लेके जा रहा है, और कल को जब उसका कोई दोस्त उसको किसी हार्मफुल ड्रग से इंट्रोड्यूस कराता है तो बजाय उसको किसी चीज़ के नॉलेज के वो उसको ट्राई कर लेता है इन द सेंस ऑफ फैशन. एंटी नार्कोटिक फोर्स. ये फोर्स पाकिस्तान में है जिन्होंने 10 साल में 1991 टू 1999, यहाँ पे भी आप रेड लाइन को कंसीडर करेंगे तो 181 टन से ओनली 10 टन्स तक ब्रॉड डाउन किया ड्रग्स की डिग्री को पाकिस्तान में. बट स्टिल पाकिस्तान इज़ ड्रग फ्री, नॉट एडिक्ट फ्री, क्योंकि ये चीज़ हमारे यंगस्टर में, हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा आ चुकी थी. 51% लोग पाकिस्तान के हेरोइन लेते हैं, 30% हैश,
जिसे कॉमनली चर्स कहा जाता है। उसके अलावा हेरोइन जो है वो सबसे वर्स्ट किस्म का ड्रग है जो कि हमारी सोसाइटी में आम अवेलेबल है। ड्रग एजुकेशन के हवाले से मेरा आज का मोटिव है, मेरी इस प्रेजेंटेशन का मकसद भी, कि ड्रग एजुकेशन को फैलाया जाए स्कूल लेवल पर, ताकि हमारे बच्चों को कल को जब वो कॉलेज लेवल पर जाए या यूनिवर्सिटी लेवल पर और उनका कोई दोस्त उनको कोई हार्मफुल चीज़ इंट्रोड्यूस कराए तो वो एक बार सोचे ज़रूर कि नहीं, ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो हार्मफुल है, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। प्लस हमारी कंट्री में 73% यूथ है। ओके मैम, स्लाइड की तरफ मूव करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। तो 6th क्लास के लिए हमारे ये ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि हम उनको गुड हेल्थ के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं, उनको वर्ड ड्रग के बारे में बताएं, ये बताया जाए कि इस्लाम में ये फॉरबिडन है और उन्हें अच्छी आदत और बुरी आदत के बीच में फ़र्क करने की अवेयरनेस दी जाए। 7th क्लास का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि उनके अंदर गुड हैबिट्स की जो आदतें हैं उनको वो एडॉप्ट करें। आप एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ एल्डर आप ये इंश्योर करें कि आपके घर का जो बच्चा है वो अपनी गुड हेल्थ के बारे में कंसर्न है। उसके बाद उन्हें हार्मफुल ड्रग्स के बारे में बताया जाए, उन्हें जो है पाकिस्तान में बताया जाए कि ड्रग अब्यूज़ किस हद तक बढ़ चुका है और उनकी नॉलेज में इस चीज़ को लाया जाए। उसके बाद उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि गुड मॉरल सिटीज़न का क्या मकाम है एक नेशन में। क्लास 8 के स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें हम देखते हैं कि उन्हें मेडिसिन्स और हार्मफुल ड्रग्स के बीच में फ़र्क बताया जाए। उसके बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाएँ, उनके हेल्थ के बारे में हेल्थ हैबिट्स के बारे में बताया जाए और उन्हें रियलाइज़ कराया जाए कि इंटॉक्सिकेंट क्या होते हैं। और क्लास 9th और 10th पे फाइनली जो है उन्हें नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाए और उनको ये एहसास दिलाया जाए कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इकट्ठे होकर इस पर वर्क करें, और ये बात मैं स्कूल तक नहीं बल्कि आप सबको कहना चाहूँगी कि आज ही अपने घर जाके अपने इर्द गिर्द लोगों में देखें, अगर कोई इस तरह की हार्मफुल एक्टिविटी में आपका कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई करीबी अजीज़ मुलविस है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एनी क्वेश्चंस? जी ये ग्लोबल इशू है जो कि एग्जिस्ट करता है, बट मेरा यस यस बिल्कुल, यू आर राइट बिल्कुल। तो उसमें आप देखें कि वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव मज़ीद भी बताए गए हैं, तो वो सबके लिए हैं। और अगर एक दिन उसको कह रहा है कि वो फॉरबिडन है तो बाकी मज़ाहिब में भी ज़ाहिर है उसको बुरा ही समझा जाता होगा और वो उसी लेवल पे जो है उसको अपने मज़हब के मुताबिक समझेंगे। उसके अलावा 3 ऑब्जेक्टिव्स और भी हैं जिसके अंदर वो कम्युनिटी शामिल है। एंड सर यू आर नॉट सेटिस्फाइड आई गेस। Yes, you are absolutely right. You are absolutely yes, yes sir. जी जी yes sir, yes sir. It's a very good point. I'll take it for the next time. Thank you so much. For keynote speech, Professor Dr. Fatma. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 .
Political Science Department, Islamia University, Bahawalpur. My topic is first slide is about the abstract. Abstract is this research paper explains hybrid war, its components, its application, being a latest war tool, as well as exposes the Indian hybrid activity within the Federation of Pakistan. India, being the main adversary of Pakistan, now using the apparatus of hybrid warfare against the Federation of Pakistan in order to destabilize the country. This research paper defines the hybrid war as well as discovers challenges of hybrid warfare to the Federation of Pakistan. These challenges include external involvement within the internal affairs of the state, that is terrorism, externally funded rebellious groups, as well as propaganda war launched by India. India now have been trying to create anarchy and chaos to gain their political objectives by utilizing the tools of hybrid warfare, supporting insurgencies, assisting terrorism, damaging development projects, especially China-Pakistan Economic Corridor, and publishing deceptive and fake media reports to influence the media of influence the minds of common masses of the country to provoke them against its own country and its institutions. Data for this conference paper has been collected through both secondary and primary sources. Now I have to move. It is very much clear, and the internal fault lines of the country. Internal fault lines of the country, that is ethnic, religious, and sectarian grounds, which are considered to be an easy play area to initiate hybrid war and destabilize the federation. Now, in the hybrid era, the adversaries of Pakistan utilizing these tools in order to destabilize the Federation of Pakistan. Balochistan being the largest province of Pakistan, now being a blue eye, and hybrid warfare is being propagated within Balochistan for the purpose of destabilizing the Federation of Pakistan. Research questions. First question is, what is the hybrid warfare being practiced around the world as a latest warfare tool? Second one is, what kind of threats does this phenomena poses to the Federation of Pakistan? Third one is, how India utilizing internal fault lines of Pakistan as hybrid warfare tools so as to destabilize the Federation of Pakistan. What are the possible remedies to curtail this phenomena from further deepening the instability it has created in Pakistan thus far? Research objectives. The study exposes the true meaning and definition of hybrid warfare. The study ascertains the components of hybrid warfare which will cause impact upon the Federation of Pakistan. To analyze and examine all the root causes of hybrid activity by India against Federation of Pakistan. Research methodology. The descriptive method will be utilized to explain the features of hybrid warfare and to investigate its role in destabilizing the Federation of Pakistan, whereas the methodology will be explanatory to elucidate and examine the Indian involvement in Federation of Pakistan, which will supportive for policymaker and policy implementation in future. Descriptive method and analytical techniques will be applied by this research study to evaluate the Indian utilization of hybrid warfare tools against the Federation of Pakistan. Researchers will utilize the data from secondary sources such as journals, books, and articles from the segment of political science and public administration. Introduction. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. One of the most critical results of World War II was the production of United Nations to reduce the regular war. As a result, another era of war begins, which had never submerged as before, using strategies that would eventually implode a country from within. The hybrid war, which is considered to be a mixed war, could be characterized as a multiform and undefeatable war in which the enemy does not know
it and the handling of observation guaranteed double activity and control. Kinetic components and non-kinetic components and non-kinetic non-kinetic and kinetic, however, are the diverse and absolute separation. Kinetic components will contain a field ranging from nuclear, space weapon, chemical options, biological weapons, air force, land force, special force, naval force, insurgents, terrorists to black operation carrying out unlawful activities, counting disruption, homicide, cyber, and social media operation, political actions including complex warfare to embrace disruption and dangerous network dissensions, infrastructure, subversion, unlawful activities, economic warfare, counting fake currencies, currency deflation, and economic intimidation, reverse warfare, ecological warfare, conceptual warfare, non-violent activism. Hybrid threat a hybrid threat is also well defined as a varied and vibrant amalgamation of irregular forces, regular forces, as well as criminal foundation of all combined to attain jointly befitting results. Indian hybrid activity against Pakistan. Indian intelligence agency RAW encourages and funding different militant subgroups in engaging the terrorist activities in Pakistan. Gulbhushan Yadav, the official agent of Indian intelligence agency, has professed the Indian participation in Balochistan. India is playing role in worsening the security issues of the province Balochistan by consuming tool of hybrid warfare against the Federation of Pakistan. The Indian government using all the means including social media, electronic media as well as print media in order to damage the Pakistan image international scenario by pursuing its political objectives so as to separate Balochistan from Federation of Pakistan and for that purpose highlighting the fake news about the province. Information warfare and counter-propaganda. On 16 July 2021, the so-called drama was launched against the Federation of Pakistan in the form of Afghanistan minister's daughter's kidnapping by the India and Afghanistan so as to deteriorate the international image of Pakistan. Initiatives have also been initiated to create a conceptual separation points in the state due to the effort of the media and deliberate publicity to help in shaping specific assessment. There is an affinity to say that the increase of firm radicalism in Federation of Pakistan after United States attack of Afghanistan as well as in the mass media and the societal war are not occasions, but a sensible and accurate strategy to draw a conceptual line in Pakistan and to generate a situation in which the two political boundaries are in state of disagreement. Now I have to move towards the last type, which is about conclusion. The paper discusses challenges of hybrid warfare to Pakistan. The geostrategic location of Pakistan make it one of the significant locations of subcontinent Asia. Pakistan is a state of diverse ethnic and religious mixture that has been misused by enemies and non-state terrorist entities. Indian government now targeting Pakistan with hybrid warfare tools, supporting uprising, giving rise to sectarian, religious and ethnic conflicts, and induction media operation based on fake news and deceptive reports. In this correction, the most novel generation warfare media as well as social media via internet is playing vital role. My findings are there is a need to travel in the track of democracy, just and fair election, regionalization and provincial sovereignty to accomplish autonomous and independent province means an independent Pakistan. A working equilibrium between the differentiating and merging forces in a pre-requirement for the smooth functioning of the Federation. In Pakistan, the preservation of such equilibrium proved a demanding task. Indian intelligence agency RAW is provoking Pakistan with hybrid warfare. In addition, India has joined hands with its Western allies to conduct subversive activities in Pakistan, particularly targeting Balochistan, Karachi, ex-Fatah regions, and Khyber Pakhtunkhwa province. India is sponsoring terrorist organization in Balochistan to create lawlessness and chaos in the province and destabilize the whole country. Thank you. Professor Dr. Fatma Rahman Dar is online back. So I would like to invite Professor Dr. Fatma Rahman Dar for keynote speech. She is Director, Center of Digitalization, including Ali Institute of Education, Lahore, FAST University, Aga Khan Medical University, Karachi, Beacon House National University, Lahore, and Virtual University, Lahore. Professor Dr. Fatma Rahman Dar. Assalamualaikum, can you hear me?
Iqbal. I'm doing PhD from Islamic University of Bahawalpur, Linguistics Department. So I'm presenting on the topic Rewriting History, a postmodern critique of A Case of Exploding Mangoes. So A Case of Exploding Mangoes is basically a novel which is written by Muhammad Hanif in 2008. And this novel is basically about the plane crash in which General Zia and some other important officials had lost their lives. So this novel is addressing that issue, and the novelist has also worked as a journalist. Thank you. So, A Case of Exploding Mangoes is, as you can see, it's written by Mohammad Hanif, and it addresses the issue of the plane crash in which General Zia and other important officials had lost their lives. So, this novel is basically a postmodern novel in the sense that it although addresses an issue but does not lead to any conclusion or does not solve the riddle of who actually murdered or who was involved behind that plane crash. So as we have short time, we move quickly towards research questions. So the basic research question was that what was the what were the postmodern characteristics and features of this novel, and how is it a parody of grand narratives. Basically, grand narrative refers to the idea that something is global or international or is known by a lot of people, that is grand. So grand thing is dealt in a very you can say that mini narrative way. So grand narratives have now turned into mini narratives as we postmodern we are citizens of a global village, and we think in a postmodern way. We do not think in a linear way. There is more distortion and chaos and in our lives. So is in our literature. So the methodology that I used was basically a qualitative content analysis. Quickly moving towards the analysis. So the book has been reviewed as multi-thematic story filled with themes of family revenge, corruption, political gaming, and above all, conspiracies. So it basically addresses the conspiracies. And again, we can see that it is about a middle and it is about a mystery and a riddle, which is not solved even till the end. So the style of the novel is like the one used in journalism. So basically, there is a blur of boundary of different genres. So genre refers to a type of text. So in journalism, we use different type of diction, different type of style we adopt, and in literature we adopt a different style. But in postmodern literature, this genre or this style is blurred. So literature is written in the style of as if it's a news story. So again, this novel is about chaos. Um, Postmodern literature negates the existence of hierarchies, rather, it talks about anarchy. Anarchy means something chaotic. So, this novel addresses something which is chaotic, and postmodern literature is considered as open and does not present one absolute truth. Rather, there are a variety of opinions. For example, when the novel begins, the novelist uses a narrator who is a very low rank official from army, and there is a concept of subaltern although it is also in post-colonial literature, but we can also use it in postmodern critique. That subaltern refers to somebody who's not in power. So the novelist had a narrator who is not in power and is talking about something grand as plane crash which killed so many well-known people. So again, it gives a variety of opinions. For example, it talks about how forensic experts saw it, how astrologers saw it, how leftists saw this incident. So there are the novel is filled with different opinions and different narrations rather than giving one absolute truth. Intertextuality is also there. Intertextuality means that one text has extracts from other texts. For example, this novel has a lot of extracts from Quran, Holy Quran, and from different newspapers, from different texts of other investigation reports, etc.
Another important characteristic was of illusion. This novel does not, represent or show to represent reality. Rather, it gives different versions of reality, leaves it on the reader to decide which version of reality is truth. So it does not dictate the reader towards the truth. It just drops different versions of truth or realities and leaves it to the reader to decide what is actually true. And again, there is use of black humor or black comedy as well. Okay, so to conclude, this is a postmodern novel and it has a lot of characteristics of postmodern literature. Thank you. Now we are moving to our next presenter, Ms. Anika Badr, for a conversation on relationship between pro-social behavior, interpersonal skills, and smartphone addiction in adolescence. Assalamu alaikum. Today the research topic that I will be presenting is relationship between pro-social behavior, interpersonal skills and smartphone addiction in adolescents. I am one of the authors, Anika Badr from Institute of Professional Psychology, Bahria University, Karachi campus, and my co-authors are Hafsa Sharik, Faliha Nadeem and Arshi Abbas Khan. So these aspects of the research will be discussed further. Now the aim of the study was basically to find out the relationship between pro-social behavior, interpersonal skills and smartphone addiction. So I will be elaborating the variables a little bit. जो हमारा पहला variable था study का, that was pro-social behavior. Pro-social behavior basically होते क्या है? Pro-social behaviors are helping behaviors जिसके थ्रू आप दूसरों को benefit करते हैं. They are the reflection of altruism. Altruism is basically selfless concern for well-being of others. और हमारा जो second variable था that was interpersonal skills. Interpersonal skills वो communication skills होते हैं जो हमें everyday life में बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें, अपनी needs, अपनी चीज़ें उनको communicate कर सकें और दूसरों की समझ सकें. लास्टली जो हमारा वेरिएबल था दैट वाज स्मार्टफोन एडिक्शन. स्मार्टफोन एडिक्शन आपका इम्पल्सिव डिपेंडेंसी ऑन योर स्मार्टफोन डिवाइसेस होता है. क्या आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, आप उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करते हो और हर एक घंटे पे अपने स्मार्टफोन डिवाइसेस को चेक करते हो. मूविंग फॉरवर्ड, इट वाज हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसोशल बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स इन एडोलेसेंस. It was also hypothesized that there is a relationship between smartphone addiction and interpersonal skills in adolescence. Lastly, it was hypothesized that there is a difference of smartphone addiction in male and female adolescents. तो मूविंग फॉरवर्ड जो मेथोडोलॉजी थी, इट वाज अ क्वांटिटेटिव कोरिलेशनल स्टडी जिसमें हमने परपोजिव कन्वीनियंट सैम्पलिंग के थ्रू डेटा कलेक्ट किया था थ्रू सर्वे क्वेश्चनर्स. और हमारे पार्टिसिपेंट्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो 11 to 18 ईयर्स के बीच में थे. दे बिलोंग फ्रॉम ऑल रिलीजियस बैकग्राउंड्स, फ्रॉम ऑल एथनिक बैकग्राउंड्स, सारे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहे थे. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि उनके पास स्मार्टफोन डिवाइसेस का एक्सेस हो और वो उर्दू लैंग्वेज कॉम्प्रहेंड कर सके क्योंकि हमारा क्वेश्चन है वॉज इन उर्दू लैंग्वेज. मूविंग फॉरवर्ड, हमने उनको इन्फॉर्म कंसेंट दिया था, डेमोग्राफिक फॉर्म दिया था और जो है हमारे जो स्केल्स हमने यूज़ किए थे दैट वर स्मार्टफोन एडिक्शन स्केल, इंटरपर्सनल स्किल स्केल एंड लास्टली प्रो सोशल स्केल. तो अब मैं रिजल्ट्स और डिस्कशन की बात करूंगी. हमारे फाइंडिंग्स से ये पता चला था दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रो सोशल बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. यानी कि हमारे प्रो सोशल बिहेवियर्स बढ़ेंगे तो हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स भी बढ़ेंगे. प्रायर स्टडी से ये बात पता चलती है कि अगर हम किसी को सोशली रीच आउट करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए. जितने अच्छे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे उतनी ही अच्छे तरह से हम उनको समझ सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे और उनकी नीड्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे. यहीं पे एक और चीज़ आ जाती है, इफ़ यू वांट टू बिल्ड आवर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एम्पैथी, जिसमें आपको दूसरों के एहसासात का ख्याल होता है, तो यू नीड टू हैव इंटरपर्सनल स्किल्स. क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसमें आपकी एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड आ जाता है, तभी आप दूसरों की बात को समझ सकते हैं.
Moreover, हमारे फाइंडिंग से ये भी पता चला था that there is a significant negative relationship between smartphone addiction and interpersonal skills, जिसका ये मतलब है कि जैसे जैसे स्मार्टफोन एडिक्शन बढ़ती चली जाएगी इंटरपर्सनल स्किल्स कम होते चले जाएंगे। तो एक प्रायर स्टडी है जिसमें ये बात स्टेट की जाती है कि अब लोगों को आपस में बात करने से ज़्यादा लोग सेलफोन डिवाइसेस पे बात करना आसान समझते हैं। और अब हमारी जनरेशन, बिकॉज एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू स्मार्टफोन डिवाइसेस, तो हर कोई स्मार्टफोन डिवाइसेस में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी है कि उनके इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्कुल ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इसमें एक और ही चीज़ आ जाती है, क्योंकि ये रिसर्च कोविड-19 के बाद कंडक्ट की गई है। तो कोविड-19 में वी वर इन अ सोशल बबल, जिसमें बिल्कुल ही हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, आइसोलेट कर रहे थे, जिसमें हमारी जो मेन एक्टिविटी थी दैट वाज बेसिकली स्मार्टफोन यूजेज। तो उसकी वजह से अब हम स्क्रीन्स के पीछे बात करना ज़्यादा आसान समझते हैं बनस्बत सामने बात करने से। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत हद तक हिंडर हो रहे हैं। और इसी कि उससे मैं एक और चीज़ ये बोलूँगी कि जैसे एक रिसर्च है जिससे पता चलता है पाकिस्तान यूज्ड टू बी अ कलेक्टिविस्टिक कल्चरल सोसाइटी, तो उसमें जो है अब लेकिन जो हमारी जनरेशन आ रही है, जो यूथ आ रही है, दे आर मोर सेल्फ सेंटर्ड, दे एक्सप्रेस इंडिविजुअलिज्म मोर, और हम इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस अचीव करना चाह रहे हैं कि उसकी वजह से हमें क्लोज रिलेशनशिप्स को फॉर्म करने में एज वेल एज कम्युनिकेट करने में अब डिफ़िकल्टी होती है। लास्टली अब मैं रैप अप करूँगी और उसमें मैं बात करूँगी हमारे लास्ट हाइपोथेसिस की, जो ये आया था कि मेल और फीमेल के स्मार्टफोन एडिक्शन में डिफरेंस नहीं होता, मेनली बिकॉज बोथ हैव सेम एक्सेस टू स्मार्टफोन डिवाइसेस। हम सबके ही पास, अब हर एज ग्रुप के पास स्मार्टफोन डिवाइसेस अपने अपने मौजूद हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। And if you guys have any questions, so you can ask. Okay. Thank you. Now we are moving our next online presenter, Ms. Benazir Aisha, to share her research on gender-based analysis of occupational stress among university teachers. I would like to invite Ms. Kuratulan to share her research distillation on basketry of Dera Ghazi Khan. Working as an associate lecturer in the University College of Art and Design, Islamic University of Bahwalpur. The topic of my research is basketry of Dera Ghazi Khan. The next is abstract. All of the points in the abstract are discussed in detail in the research, in the further research. The next is introduction. Dera Ghazi Khan, situated on the western bank of Indus River, was established in 1476 by a ruler of Balochistan, Haji Khan Virani. The name of this city was kept after his son's name, Ghazi Khan. The tomb of Ghazi Khan is located near Churhatta in the current town of Dera Ghazi Khan. This tomb is a residing example of the high quality architecture of that period. Basketry. Basket weaving is an art form and a skill that allows women and men across the country to express themselves and their imagination in different forms and shapes. Many items are kept in basketry like dry fruits, bread and other households. Each area and its people have their own unique style of weaving, color, pattern and general layout. Weaving. Weaving is a technique of interlacing two linear elements to create a large system, namely warps and webs at the right angle to one another. The system developed by weaving increases surface stability. Using simple tools, this technique can be used. Weaving generally exists around us in nature, like spider webs making their own network styles, nests of birds woven by male birds, and structure constructed by ants using branches to create a platform. This is a weaver bird who, in this species, we can say that the male bird weave the nests at the season when the female bird give birth to the children, and they demolish their. He is also called as the architecture bird. They demolish their nest after that period. This is the material plant which is grown. The good quality of this cane plant is grown in the
This is grown in the Indonesia, and the people and artisans of the Digi Khan who work on this material, they import the material from the worldwide areas like Indonesia and Singapore, where this grown in very good quality. This is the process of import, how the people tie up the material, and they export the material to all over the world, into the Pakistan, Hijkan areas in wire containers. Basic techniques of the basketry. There are 6 basic techniques of the basketry. One of them is hexagonal technique. Second one is coiling. Third one is twining, plating, knot looping, and swaying and straying. This is the procedure how the artisans cut the material and they soak into the water, and after the once the material get soaked, they proceed to the next level, and they use the process of flaming to give the required shape to the material for the further procedure. These are the basic tools which they use. These are the basic tools which they use to give the required shape to their material to create the baskets and the architecture. This is the one of the picture of the architecture. Its inner side and outer side. The construct its inner and outer side. The structure of created by the sticks, and the outer side is beamed by the grass. All these images are taken from the different areas of DG Khan by the researcher. These are the artisans. They live at the bank of the river Sindh, Indus River, which is also called Indus River. In these images, it is also shown all of the process. The plants are also shown how they tie up. How these artisans cut these plants from the different areas of the Indus River. These plants grown inside of the river. When the season, in the winter season, they cut these plants from the river and they save it and work on it all of the year. These are some of the cultural baskets which we all people use in our houses. This is a very important slide. I would say that this is a very dying craft of our southern Punjab. We have to save our culture, our dying crafts, by we can revive it in our different. We can revive in our different aspects. Textile designers have worked on it. She has used the craft into the interior decoration and textile trades. The one in the last is a conclusion. This research is based on the aesthetic analysis of the making process, techniques, and materials of basketry. This leads to subsequent findings. Only a few sources were accessible for its historical background, which merely contained the contextual information. No research work before this have been done to evaluate the detailed work on the basketry of Awaz-E Khan. As every field of art and craft is progressively day by day, the competition has increased intensively. Nowadays, the design is being used in interior decoration and textile trades. So this renovation of basketry require exploration in future. If any one of you have any question, you can ask, please. Thank you. Now I would like to invite Dr. Maruf Naseem to share the research on in vitro bioactivity assessment. Dr. Maruf Naseem. Assalamualaikum. Thank you very much. First of all, I would like to pay my thanks to the organization committee of the STEM for providing us the opportunity and giving the umbrella under which we can discuss our scientific idea all over the Pakistan and all over the world. So, the topic of my presentation is in vitro assessment of the bioactivity of the extract from the leaf of neem and eucalyptus. Here is the outline. I will go through it quickly because of the shortage of the time. So these are the two reasons. One is the antibiotic resistance and other one is the oxidative stress, due to which we conducted this study. As you all know that nowadays the
antibiotic resistance is increasing very fastly, and there are certain mechanisms for this, and I will discuss it later. There are certain reasons, including the excessive use of antibiotics, due to which the body of the human underwent into the oxidative stress, and this oxidative stress in turn damage the DNA, damage the protein, and of course increase the lipid peroxidation. Here is a diagrammatical representation of the antibiotic resistance, the mechanisms in which I shared, in the previous slide. So the most important is the reflex pump, in which the antibiotic enters into the bacterial cell, but it do not have any effect on it and reflects through the pump out the bacterial cell. The next one is the antibiotic resistance, in which the antibiotics are not able to target the targeted cell. The other mechanism is in which there is modification in the antibiotics because of the antibiotic alkylating enzyme. And the last one is the degrading enzymes, which are present in the body of the bacteria, and it deactivate the mechanism of antibiotics. Here is the slide which showing the oxidative stress. Oxidative stress is basically caused because of the ROS, the reactive oxygen species, and there are certain important features of it, and the reasons behind it is some are the external reasons and some are the internal physiological mechanisms. For the external one, the smoking, the alcohol, the UV radiation are very, very important. You can also say that the environmental factors also play important role in the development of the raw species. As far as the internal features are concerned, inflammation, excessive use of any drugs including the antibiotics or any other metabolic disease. It leads to the damage to the DNA of the human body, oxidative damage, cause damage to the protein, as well as increase the lipid peroxidation. All these in turn cause certain disorders in your body, like ulcer, like carcinogenic agents like fibrosis or any other disease in your body. So, to address this question, we designed this study and we selected the plant, the neem extract and the eucalyptic extract to solve this problem, because the plants have a great antimicrobial and the antioxidant properties, and they are the biofactory or molecule. Single molecule can be compatible to your body, as well as can have the ability to go through certain pathways, and there are less adverse effect and biocompatible to the body. So the primary aim or objective of our study was the extraction of the bioactive flavonoids from the leaf of neem and eucalyptus, and to assess the antimicrobial and antioxidant activities, as well as the phytochemistry of characterization of this extract. Here is the layout of the methodology. For the methodology, we collected the plants and extract the and prepared the extraction. We used two solvents, the ethanol and the N-hexane solvent, both for the neem as well as for the eucalyptus leaves, and then we stored it in a container for the further analysis. First of all, for the antibacterial activities, we use the agar-well diffusion. In the agar-well diffusion, we use the agar gel, and we loaded these leaves for the antibacterial activities in the walls. We dig the walls with the help of micropipettes, and then we measure the antioxidant species, the antibacterial properties. For the antioxidant assay, we use DPPH assay with the help of a kit and follow the protocol given in the kit. Because of the shortage of time, we are not going through the procedures. In the methodology, as I told you earlier, we collect the plant from the Awaz-E district of Bahwalpur. We made the identification, and the leaf extracts were done. And we, for the phytochemical analysis, we use 5 constituents: the alkaloids, the saponines, the glucoside, terpenoids, and the flavonoids. Here are some conformation layout of some conformation tests for these, and have a look on the result.
For the antibacterial activity of the Micrococcus luteus, we found that ethanolic neem extract shows a great inhibition activity against this bacteria. The next one is the Staphylococcus epidermidis. For this, again, the ethanolic neem extract showed the great activities, maximum activities, and followed by the ethanolic eucalyptus leaf extract. For the Staphylococcus aureus, we found a maximum activities, inhibiting activities for the ethanolic neem extract, followed by the ethanolic extract of the eucalyptus. For the Bacillus, for the Bacillus subtilis, again we found that ethanolic eucalyptus shows a maximum activities against this bacteria. For the next one, cumulus, again the ethanolic extract of the eucalyptus shows the great maximum control against this bacterial activities. For the E. coli, ethanolic neem extract showed a great activities. For the bronchitis, we found that the ethanolic eucalyptic extract shows a maximum control against this bacterial activity. Have a look on the antioxidant activities. For the antioxidant activities, as the graph shows that ethanolic extract of the eucalyptus shows great antioxidant activities as compared to any other solvent, and here the positive control is the ascorbic acid. For the phytochemical analysis, we represented it in this table, and for the N-hexane extract as well as for the ethanolic extract of the neem, we found that only 3 components were present, and 6 were present for the N-hexane and the ethanolic of the eucalyptus leaf extract. So have a look on a conclusion, and in conclusion we found that the ethanolic neem extract shows a maximum activities on the Staphylococcus aureus. As compared to any other component, the ethanolic eucalyptus shows a great antioxidant properties. It has a great antioxidant properties of the scavenging against the oxidative stress, and terpenoids, flavonoids, and steroids were present both in N-hexane and ethanolic extract of the plant, of both the plant. However, glucoside was not present in any one of it. And the last one is that the solvent having the highest polarity, that is the ethanol of both the plants, shows a great activities, antibacterial and the antioxidant as compared to the other, and the phytochemical constituents was present in both the solvent solution. For further recommendation, it is recommended that as we use the 7 types of the phytochemical constituents, so by isolating each constituent of this plant, we can use a further study to analyze different diseases, or use certain other plants of such type which having activities against the diseases to go through the control on certain diseases rather than the antibiotics. Thank you very much for listening the talk. You may ask any question if you have. Thank you very much. Now, I invite our next presenter, Ms. Nimra Noor, to start a conversation on exploration of perceived challenges encountered by newly enrolled IUB students. Ms. Nimra Noor. I'm Nimra Noor from the Department of Applied Psychology, Islamia University of Bahwalpur. Today I am present my topic, exploration of perceived challenges encountered by newly enrolled student at IUB. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब एक ट्रांजिशन फेज से मूव करके एक यूनी की तरफ आते हैं. फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज लाइफ होती है, आपका सराउंडिंग्स, आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपका इवन जो स्टूडेंट कॉलेज से अपने एरियाज़ में होते हैं वो हॉस्टल में मूव करते हैं, तो उनका ईटिंग साइकिल, उनका सब कुछ चेंज हो जाता है यूनिवर्सिटी लाइफ में मूव करने के बाद. तो इस चीज़ को मैंने बेस बनाते हुए एक रिसर्च कंडक्ट की है. उसका रिसर्च क्वेश्चन मेरे ये है कि यूनिवर्सिटी लाइफ को स्टूडेंट किस तरह से इनकाउंटर करते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ के ऊपर उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और इसमें जो चैलेंजेस है वो उनको क्या हैं.
प्रिसीव चैलेंजेस का वर्ड बार बार आएगा, उसका लिटरल मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि आप किसी चीज़ को किस तरह से मतलब देते हैं, उसको बोलते हैं आपकी प्रिसेप्शन, कि आप उस चीज़ को किस तरह से समझ रहे हैं, वो आपकी प्रिसेप्शन होती है। इसी तरह से चैलेंजेस तो एक एक्चुअल है कि प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप किस तरह का मीनिंग दे रहे हैं, वो आपके होंगे प्रिसीव चैलेंजेस। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी इज डैट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, उन्होंने एक स्टडी की 2014 में। उनके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जो स्टूडेंट होते हैं अब जिनके मोस्टली प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनकी परसेप्शन बेस होती हैं कि वो किस तरह से परसीव कर रहे हैं, और उनकी परसेप्शन डिपेंड करती है और अफेक्ट करती है आपके एकेडमिक एरियाज़ को और आप जो नॉलेज ले रहे हैं उसके ऊपर। इसके अंदर एक और स्टडी थी कि वो स्टूडेंट जो समझते हैं कि उनके लिंक्स हैं एकेडमिक प्रोफेसर से, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट जिनका लिंक्स वगैरह नहीं होते हैं। ये एक स्टडी का कंक्लूजन था। नेक्स्ट हमारे पास स्टडी थी 2016 की। उसके अंदर कहा गया कि फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रेड से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से इनकाउंटर कर रहा है। नेक्स्ट, मैं ये चीज़ को सबको मद्देनज़र रखते हुए आईयूबी के अंदर आप देखते जा रहे हैं कि लास्ट ईयर इतने स्टूडेंट्स नहीं थे, अब हमारे स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये सब फिनोमेना मैंने आईयूबी के स्टूडेंट्स में देखा कि आईयूबी के स्टूडेंट्स किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं और इन चैलेंजेस को किस तरह से काउंटर करते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी की तरफ आते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी, अच्छा, रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर फोकस ग्रुप डिस्कशन थी, क्वालिटेटिव जैसे मेरी रिसर्च है, तो इसके अंदर मैंने 2 फोकस ग्रुप डिस्कशन की। एक 5 फीमेल्स के ऊपर डिपेंड करती थी, दूसरी जो थी 5 मेल के ऊपर कंसिस्ट करती थी। 5 फीमेल की और मेल की जो डिस्कशन थी उनको फिर कोलैबोरेट करके एक कंप्लीट रिजल्ट आपके सामने रखा गया। इसके अंदर मेरे पास 4 कोर थीम्स आए। कोर थीम्स के अंदर नेक्स्ट है सैम्पल रिसर्च पार्टिसिपेंट, इसमें आएगा हमारे पास मेल और फीमेल की स्टडी थी। इसके बाद आपका डेटा प्रोसेस करने के बाद डेटा प्रोसेस मैंने मैकलीन का एक जो ट्रांसक्रिप्शन, एक उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है बेसिकली कि आप किसी भी के डाटा को ऑडियो या वीडियो के अंदर पहले रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, उसको फिर उसी कोडिंग की जाती है। प्रॉपर कोडिंग करने के बाद उसको 2015 का मैनुअल है उसको यूज़ करते हुए मैंने उसकी कोडिंग की। देन उसको कंप्लीट जो हमारे पास थीम्स है उनको क्लस्टर्स को मर्ज करके एक रिजल्ट्स बनाए। एथिकल कंसिडरेशन साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइकोलॉजी में इसका मेजर रोल होता है। एथिकल कंसिडरेशन बेसिकली वो होते हैं कि आप किसी के साथ डिस्कस करते हुए या किसी का डाटा लेते हुए आप किन किन तरीकों को या फिर किन किन प्रिकॉशंस को लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने लिया था उनका डाटा, उनके नेम्स, उनकी आइडेंटिटी, उनकी एज, उनका पेयर ग्रुप, उनके सारे रिलेशन जो वो गुजार के आए हैं उन सबको कॉन्फिडेंशियल रखा गया। उनकी आइडेंटिटी से लेकर उनके क्लास बैकग्राउंड को, वो क्लास में किस तरह का परफॉर्म करते हैं, वो इस तरह की इस प्रेजेंटेशन में मौजूद नहीं है, वो मेरे तक था और मुझ तक ही रहेगा। अब हम आते हैं फाइंडिंग्स की तरफ। फाइंडिंग्स के अंदर हमारे पास जो थे मोस्टली जो चीज़ उन सब में फेस देखी गई उन सब में सोशल एंजाइटी बेसिकली टर्मिनोलॉजी होती है कि आपको इंटरेक्ट करने में किसी से प्रॉब्लम होता है आपको, तो उसको बोलते हैं सोशल एंजाइटी कि आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और डिफेंसिवनेस, फॉर एग्जांपल अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही से साबित करने के ऊपर आपकी ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, आप उस चीज़ को दूसरों की बात को मानना नहीं चाहते हैं, उसको बोलते हैं डिफेंसिवनेस। उसके बाद जेंडर बायसनेस मोस्टली देखी गई क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली को-एजुकेशन से बिलोंग नहीं करते, वो अपने जेंडर को लेकर ज़्यादा अपने जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट थे एज़ कम्पेयर टू दूसरे जेंडर की तरफ। को-एजुकेशन की बायसनेस उनमें देखी गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स की एप्रीहेंशन से हम बात करेंगे। एप्रीहेंशन उनमें फाइंड की गई कि उनमें फ्यूचर कंसर्न ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलेज लाइफ। स्टूडेंट जो कॉलेज लाइफ में अपनी सब्जेक्ट को लेके, अपने गोल को लेके, अपने फ्यूचर को लेकर इतने ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं थे एज़ कम्पेयर टू यूनी लाइफ में। यूनी में आते ही उनका एक गोल सेट है और उनको ये पता है कि अब हमने फ्यूचर में इसके बाद मार्केट में जाना है या फिर काम करना है, तो किस तरह से करना है। इंप्रेशन मैनेजमेंट की टेक्निक को यूज़ करते हुए वो अपना कॉन्फिडेंस और अपना सेल्फ प्रमोशन इस चीज़ से बिलीव करते थे कि आपका जो इम्प्रेशन है वही सब कुछ है जो लोगों के सामने आप बना रहे हैं। वो फेक की तरफ भी जा रहे थे और उसकी तरफ भी जा रहे थे, नेचुरल की तरफ भी।
नेक्स्ट है उनकी नेक्स्ट मेरे कंक्लूजन यही होगा कि उस स्टडी का कि हमारे पास सब थीम्स जो निकले उन स्टूडेंट के अंदर हमारे पास सोशल एंजाइटी थी, डिप्रेशन की तरफ जा रहे थे और उनके अंदर अपने बिलोंगिंगनेस और वो होम सिकनेस फील कर रहे थे क्योंकि वो अपने घरों से दूर थे। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? जी यस प्लीज। I request Mr. Khurram Shahzad to start a conversation on impact of MF upon JP of librarians in Pakistan. Mr. Khurram Shahzad. I would like to invite Mr. Muhammad Qasim Qadir to give a talk on the role of Assistant Education Officer in implementation government policies in educational institutions. Mr. Muhammad Qasim Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I want to thank STEMS for giving us such opportunity. My topic is Mr. Khurram Shahzad to start a conversation on impact of MF upon JP of librarians in Pakistan. Mr. Khurram Shahzad. Impact JP of librarians in Pakistan and investigation. Research work has been co-authored by Professor Shakil Ahmed Khan, Department of Library and Information. I request Dr. Muhammad Adil to come on stage and start your conversation. Mr. Dr. Muhammad Adil. Assalamualaikum. Dr. Muhammad Adil. Recently, I have completed my PhD degree in physical chemistry from the Islamia University of Bahwalpur. My topic is energy storage and environmental protection. Scheme of presentation. Introduction. Growing population, depletion of fossil fuel resources, and rapid industrialization are the three main causes that are increasing and developing energy crisis and crucial concerns. According to latest IEA report, almost 20% of the energy need is fulfilled by green resources, whereas 80% energy need is fulfilled by fossil fuels. This condition is not useful. It is an alarming condition because the fossil fuels will be exhaust soon. So we should rely on the renewable energy sources for the energy production, such as the solar resources, as these sources are eco-friendly and are infinite. Problem with solar energy. Actually, the solar energy is not continuous and change with time, with climate, with latitude and weather. Therefore, we cannot rely on the solar energy directly for the energy production. Need of the time. The need of the time is to develop highly efficient energy storage devices that capture energy, gather energy from the disrupted supply of the solar light and then give back on demand. Among the energy storage devices, 4 devices are very common. The first one is electrostatic capacitor, second one is the supercapacitor, third one are the fuel cell, and fourth one are the batteries. Supercapacitors are famous due to their energy density, whereas supercapacitors are famous due to their power density, whereas battery due to energy density. The third and new energy devices, that is a supercapacitor, have both properties, so we select it. Concept of power density and energy density. This illustration clears the concept of power density and energy density. The power density, how quickly deliver; energy density, how much a device can store.
Regen plot indicate that supercapacitor has a wide range of energy density and power density to us. Why supercapacitor? Why not battery? Why we want to replace a battery from the market? And with the supercapacitor, there are few reasons. Battery have low power density, where supercapacitor have the high one. Poor cyclic performance, where the battery and supercapacitor have the good one. Slow charge discharge rate and low performance at the higher temperature. These are the motives behind the research. Is supercapacitor ideal storage device? The answer is no. Some problem also associated with the supercapacitor. What's the problem behind? The problem is the low energy density. How to solve this solution? Formula of energy density is here. There are two ways to increase energy density: by enhancing the C, that is the specific capacitance, and V, that is the potential window. How we can do this? Main target is to improve the specific capacitance by choosing a novel electrode material. Classification of supercapacitor based on the electrode material. There are two types of electrode material: the carbon-based material and redox active material. If we combine these two, we get a third, that is called the hybrid capacitor. Working principle of ADLC and pseudocapacitor. The ADLC is the surface-based process, whereas the pseudocapacitor is a redox process. These are the main components of a supercapacitor. And present your research. Ms. Darshan Siraj. Assalamu alaikum everyone. With the permission of current chair, I will start. I will not let you sleep anymore. Right now, my topic is prospective teachers, acceptability and intention to use Moodle, a follow-up study of an experimental investigation to COVID-19 pandemic. Basically, मैं आपको इसका context बता देती हूँ. Pandemic से पहले ये calamity तो बाद में आई, मेरी research जो है वो in process थी, और उसमें जो मैं as a being educationist मैंने देखा कि स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. उस स्क्रीन टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने जो है वो अपनी रिसर्च प्लान की, और उसमें मैंने Moodle यूज़ किया, ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, उसमें मैंने कन्वर्ट किया MS वर्ड को विद द गूगल डॉक, दैट इज़ द कोलैबोरेटिव राइटिंग टूल, जिसकी वजह से क्या हो गया, स्टूडेंट कोलैबोरेट कर सकते थे गूगल कॉन्फ्रेंस के साथ, एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर बैठ के अपनी अपनी जगहों पे जो है वो कोलैबोरेट कर सकते थे. तो इस स्टडी के बाद मैंने एक फॉलोअप स्टडी भी की, जिसमें मैंने ये देखा कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसकी यूज़ेबिलिटी क्या है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है. अगर स्टूडेंट्स में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो उनकी इंटेंशंस भी नहीं डेवलप होते. जब इंटेंशंस डेवलप नहीं होते तो बिहेवियर्स भी उनके जो है वो डेवलप नहीं होते. तो बेसिकली मेरी रिसर्च जो है इस फॉलोअप पे थी. नेक्स्ट. Educational institutions are moved forward to use the Web 2 technologies as a core part of the classroom practices because of vast expansion of technology. Web 2 technologies, which include the web-based learning environments or e-learning environments, have become the part and parcel of every student's academic life. In a new normal, learning management system can be a better platform to track student engagement and their performance in studies such as the Moodle. Moodle help the teacher to develop active and dynamic online learning student sites for their courses and actively engage students in their learning. तो बेसिकली इसमें Moodle का इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि बच्चे जो हमें ऑनलाइन लर्निंग में हमें बच्चों की पैसिव नज़र आते हैं, उनको एक्टिव करने के लिए जो है वो हमने Moodle को यूज़ किया था. Before introducing any new technology to the educational institution, the user acceptability to use that technology is very important. To examine technology acceptance in educational context, technology acceptance model, TAM is an excellent model to provide an insight to examine the student attention, either acceptance or rejection of the technology. तो TAM, डेविस ने एक मॉडल दिया था TAM, जिसके ज़रिए से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि जो हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने सिस्टम में या अपने एजुकेशन में, तो उसकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर के साथ जो है वो हम मेजर कर सकते हैं. TAM have different factors. Perceived usefulness. As you know that कि जो चीज़ आपको आसान लगती है या आपको यूज़फुल लगती है, आप उसका इस्तेमाल जो है वो आपके लिए बेहतर हो जाता है. Perceived ease of use, जो चीज़ आपको ईजी लगती है उसके लिए आपकी एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है. लाइक द स्मार्टफोन्स आपको लगता है कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है, आप इजीली उसको, आपके बिहेवियर्स, आपके एटीट्यूड भी वैसे हो जाते हैं. ईज़ ऑफ यूज़ के साथ जो चीज़ आपको टेक्नोलॉजी ईजी लगती है, आप उसके एटीट्यूड भी आपके अकॉर्डिंगली वैसे हो जाते हैं.
बिहेवियरल टेंशंस, जब एटीट्यूड चेंज होंगे तो डेफिनेटली बिहेवियरल टेंशंस भी आपकी जो है वो चेंज हो जाएंगे। Objective of the study to examine the perception of prospective teachers to use Moodle as LMS in their online learning classes. To measure the factors contribution to their acceptance and intention to use model. तो टैम के different factors को जो है हमने further analyze किया था. Now the results, Pearson correlation इस पे हमने लगाया सब सारे factors में जो है वो Pearson correlation जो है वो positive और उसकी values भी high आई because Moodle एक ऐसा ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है जो कि यूज़र फ्रेंडली भी है और साथ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और साथ में जो है वो डिस्टेंस फ्रेंडली भी है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी इजीनेस, उसकी यूजफुलनेस की वजह से बच्चों के इंटेंशन, उनके एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर्स में जो है वो पॉजिटिव चेंज आई और वही चेंजेस जो है वो यहाँ पे आपको रिजल्ट में भी शो हो रहे हैं। Conclusion, one major factor to adopt a new technology is its ease of use and perceived usefulness, which is the prime concern of the study. User friendliness, friendly interface of a technology helps students to use it easily in minimum time. It further concludes that flow of information in a web-based learning is steady when students did not feel isolated in the classroom activities because of their positive attitudes and behavior intentions to use that technology. This study further concludes the greater communicative and interactive opportunities can be provided through the use of LMS such as Moodle. Recommendations. Before any inclusion of technology in an education institution, it is recommended to assess how far the students in higher education demonstrate an acceptability and intention to use the technology in the classroom through pilot testing of the technology. Randomly हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए, पहले उसकी पायलट टेस्टिंग करें सो दैट हमें फिर बाद में ये मसला होता है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे जो है वो पैसिव बिहेवियर शो करते हैं। पैसिव बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट्स, वेब बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल करके। It is recommended that open access and user-friendly LMS such as the Moodle may be the integral part of any regular classroom teaching and on-learning teaching practices. Teachers and parents both should come together to make the most effective use of the children's screen time by making the efficient use of technology in their learning. This transformation in learning system will lead us towards paperless work, which is the dire need of the time. So basically, मेरी research में भी ऐसे ही था कि we didn't use a single paper. Each and everything has been web-based. Each and everything has been digital content. हमने उसमें different exposure यूज़ किए, हमने Moodle के different modular जो orientation थी उसको हमने इस्तेमाल किया और इस तरह से बहुत healthy experience रहा। ना सिर्फ ये कि बच्चों ने सीखा, like डॉक्टर फातिमा has told that कि हमें जो curriculum है वो skill based बनाना चाहिए। curriculum बनाने में बहुत टाइम लगता है। टीचर जो है एक डिज़ाइनर होता है अपने कोर्स का, अपनी कोर्स आउटलाइन का, अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज़ का। तो हम अपने कोर्स को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं स्किल बेस्ड, स्किल्स भी वो जो कि वर्क प्लेस स्किल्स हैं और 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। तो डेफिनेटली वही चीज़ें मैंने इनके